All right. So, Umar, funny story. Um, Hmm. Tuesday की बात है, जिस दिन you might remember, I was extremely tired in class as well. Uh, I was Yeah. coming out of the sports complex and I met Hafsa. And उस वक्त I was extremely tired, extremely sleep deprived, the whole 9 yards. और जब मैं निकला बाहर, ठीक है, तो वैसे ही उसको मैंने idea float किया of the podcast, and I told her कि we're going to do an episode with the Music Society as well. So and now when I look back at it, I was actually yelling, okay, oh my God, let's go, let's talk about music, let's do this, let's do that. And the fact that Hafsa still showed up, thank you so much for coming. I am keeping you from the weather outside. I am extremely sorry, but it's an honor to have you on this podcast. Um, Introduce मैं आप लोगों को नहीं करूंगा, आप लोग खुद ही करेंगे. Hafsa, would you like to go first? Yeah, sure. And नहीं, I actually remember you screaming. और मुझे ये भी याद है कि ना 2-3 लोग गुजर रहे थे उमर साथ से, और वो लिटरली इस बंदे को इस तरह से देख रहे हैं कि ये इतना चीख के क्यों बोल रहा है। और मतलब हमारा बहुत ऐसे बात इंटरेक्शन ऐसे होता रहता है, लेकिन इतना मतलब कॉन्वर्सेशन वाला इंटरेक्शन बहुत ऐसे बात हो रहा था। और मैं मतलब कुछ ही नहीं पा रही थी कि मतलब थोड़ा आहिस्ता बोलो या I mean, I But remember you were yeah, almost I'm startled. You were glad like, you bro. invited me to the podcast. Introduction, yeah. अच्छा खैर, the introduction. I am Hafsa. I am the HR and registration director in the Music Society, and I joined the Music Society in my first year, and I've been in the society for almost now. Yeah, and I am passionate about music. I don't know how to introduce myself musically, because I am not done much related to music. So it's like very low key. I like listening to music. I like singing. I do sing. Like, and it's All right, all right. Umar, would you like to introduce yourself? Sure. So I'm Omer. I am the director logistics for the Music Society of LUMS. I've been in the Music Society like Hafsa since my freshman year. I was team member logistics, फिर मैं AD logistics था. Now I'm director logistics. So yeah, pretty like smooth sailing journey you could say till now. It's what I wanted and sort of what I am. So to be very honest, I think for me music is the biggest part of my life in the sense that I've been writing since I was very 12. Yeah. And मतलब पहले poems वगैरह थी, sort of मैं narratives लिखता था kind of weirdly जैसे बच्चे लिखते हैं. Oh my God, I am so sorry. वो जो होता है ना कि what can possibly go wrong will go wrong. आज वो वाली vibe है. I'm so sorry. Umar, were you saying something or were you done? मैं like बीच में ही था उसके हाँ, introduction बोलो, के. please continue. I'm so sorry. तो हाँ, it was just कि I started writing songs when I was sort of 16 or 17, and उसके बाद से it's sort of been like no turning back, क्योंकि वही है like सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ होता है which like gives them sort of solace and comfort and like excitement and at the same time like chaos भी. तो मेरे like जिंदगी में हर चीज music से ही बनती है, से लिखने से it sort of connects everything for me. So I've been writing, I've been playing amateur guitar for 4 years now, you can say. Yeah, 4 years. And I sort of sing. I try to sing. But my main thing is like writing music. That's what I'm into. I try to not emulate or imitate, but try to sort of follow this, singer songwriter esque journey, जैसे Taylor Swift की है या Paul McCartney की है, into that lane where it's just if you try to hear a strong strip down like just with a guitar, it shouldn't make sense. And at the same time, it should also make sense if you're like singing it to maybe 60,000 people into a crowd. This is something that John Mayer said. I don't know why it resonates with me. मैंने कभी 60,000 लोगों के लिए गाया नहीं है. But like गाना लिखते हुए sentiment वही होता है कि a song should make sense no matter how big or how small your audience is. So yeah, with that sentiment, I try to write, and I listen to a lot of things like
Bollywood बहुत ज़्यादा, like very very, you could say, I don't know, I don't want to classify it as cheap Bollywood, but like that's the term that people use for item songs. I was listening to item songs. Here, I also love listening to the Beatles and Led Zeppelin and John Mayer and Taylor Swift. Lately, I've been getting into indie rock, like the Backseat Lovers. So yeah, Mm. I don't try to limit my taste at all. For me, music is as diverse as it should be, and I try to make my taste diverse too. Likewise. So yeah, that's my music journey or introduction, you could say. या ऑल राइट बहुत ही ज्यादा मॉडेस्टी का मुजाहरा किया है आपने फर्स्टली यू आई हैव हर्ड यू सिंग सो मेनी टाइम्स ओके सो स्टोरी टाइम हम तो क्योंकि पेंडेमिक वाला बैच है ना तो when we came in our sophomore year and we had that O weekend before that Umar and I we were in a presentation together so I did know that this guy exists and we had a mutual friend from Karachi as well so थोड़ा आइडिया था कि अच्छा ये बंदा कौन है तो जब O weekend पे um you came and you know you did your performance और वो सारा कुछ और वो performance में um now I don't know which song it was, but it was an original song of yours और I could not tell कि ये मुझे लगा कि ये कोई गाना है किसी का गाना है ये गा रहा होगा probably it felt very 90s you know I remember thinking that it felt like you know 90s का कोई गाना and you know और फिर मुझे बाद में पता चला कि this was an original song and then I also got to know ये inside खबर मुझे मिली है that you are literally referred to as lyrics की machine and I can personally attest to that so uh, काफी modesty हमने देखी है so I'd like to you know sort of steer this conversation in a certain direction so starting with Hafsa what would you when you think about music and when you think about not just your musical journey but just generally um you know your thoughts on music um and I want to go back to like I want to sort of go back to हमारा बचपन ठीक है तो तो growing up what was the kind of music that you were listening to what were your favorites back then you know and what did music mean for you uh उस time में where you don't really know the meaning of anything. Yeah. So, I actually have a story to tell इस point पे कि even though कि बचपन में इतना ज़्यादा I didn't realize कि I was very much connected to music, लेकिन there is this really funny story that happened when I think I was in grade 5 और तब मैं ना वो उर्दू अल्फाज मायनी होते थे ना मैं वो याद कर रही थी तो there was this word अंधेरा और मीनिंग था बहुत ज्यादा अंधेरा Yeah. मुझे याद नहीं हो रहा था ये तो लाइक मैं कॉन्स्टेंटली kept saying घुप अंधेरा बहुत ज्यादा अंधेरा घुप अंधेरा बहुत ज्यादा लाइक बहुत ज्यादा रिपीट कर रही हूँ उस पे हाथ रख के मीनिंग से रिपीट कर रही हूँ लेकिन याद ही नहीं हो रहा था तो लाइक आई केप्ट ऑन सेइंग फॉर लाइक अ लॉट ऑफ टाइम्स और थोड़ी देर बाद ना जैसे उमर ने कहा ना कि वो धुन बन गई उसकी तो वो पूरा ना राउंड सा वो बन गया फिर मैं उसको बोल रही हूँ वो अंधेरा बहुत ज्यादा अंधेरा और उसके मैं आई वॉज लिटरली अ किड और उसके अंदर ना मैंने ये थोड़ी सी वो चीजें डाल दी मैंने कहा कम ऑन एवरीबॉडी सिंग इट विद मी से घुप अंधेरा बहुत ज्यादा अंधेरा घुप अंधेरा और वो लिटरली एक पूरा सॉन्ग बन गया अब मुझे एग्जैक्टली नहीं याद मैंने उसमें क्या डाला था लेकिन मैंने उसके अंदर ना 2-3 सेंटेंसेस और भी डाल के ना मैंने लिटरली मेरे दोस्तों को सुनाती होती थी क्लास में so this is how you know एक वो अजीब सा एक स्पार्क था this is the that instance that I remember from my childhood and then there was this platform ask.fm if you guys remember Yeah, or yeah, you yeah. guys Yeah. yeah ask.fm तो उधर आई रिमेम्बर कि बहुत बचपन में व्हेन आई क्रिएटेड माय अकाउंट वहां पर एक ऐसे ना चैलेंज सा आया था कि यू हैव टू सिंग नो मैटर हाउ वेल यू सिंग मतलब जस्ट रिगार्डलेस ऑफ योर सिंगिंग वगैरह यू जस्ट हैव टू पोस्ट अ वीडियो ऑफ यू सिंगिंग और तब मैंने कुरतुलैन बलोच का हम सफर गा के वहां लगाया था और उस पे बहुत ज्यादा ना मतलब उस पॉइंट पे अ लॉट ऑफ पीपल लाइक्ड अ लॉट ऑफ पीपल रिएक्टेड और फिर वहां पे अनोनिमस कमेंट्स वगैरह आते होते थे ना तो वो ये दो लाइक वो दो इंस्टेंसेस हैं फ्रॉम माय चाइल्डहुड दैट एक्चुअली गेव मी अ स्पार्क एंड इवन दो मतलब आई वाज नॉट दैट इंक्लाइंड बट देयर वाज अ कनेक्शन बिटवीन मी और सारा म्यूजिक वगैरह एंड टू योर सेकंड क्वेश्चन कि द टाइप ऑफ म्यूजिक बचपन से सो आई एम वेरी मच लाइक
थोड़ा सा not very classical but like थोड़ा सा जो वो पाकिस्तानी से कुरतुलैन बलोच ये इनके जो जो भी जितने गाने हैं हम सफर हो गया और इस तरह के जो ओएसटी हैं हदीका केआनी इन सब की आवाजें इनसे बहुत ज्यादा मैं रेजोनेट करती हूँ आई डोंट थिंक उमर या फिर इन एनीवन इन द म्यूजिक साइड एक्चुअली नोज दिस लेकिन लाइक दिस इज लाइक माई टाइप ऑफ म्यूजिक के इस तरह के जो गाने अभी रिसेंटली मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है हदीका क्यानी की जो है देयर इज दिस कवाली उसका नाम है रंग। आई एक्चुअली फॉरगॉटन द नेम नहीं नहीं द कवाली गान क्या होगा Okay, okay. I All right. love that Kavali. Abhi, Yeah. yeah, there was this event that was supposed to happen, Music Society का Bob, and I actually thought कि मैं इस तरह का कुछ करूंगी, लेकिन वो नहीं हो सका. लेकिन this is the type of music that I have been listening to since my childhood. और अभी तक this is the music that resonates a lot. अभी तक like this is the music जिससे अभी तक you comfort feel करना और वो just going back to this type of music when I want to Yeah. listen to Yeah. it. Yeah. I actually relate to your story बहुत ज़्यादा because I also remember growing up. एक तो उस वक्त I just generally feel that it was a very sort of it was like a purple patch for Pakistani music because हर band अभी नए bands आ रहे थे every band was sort of at their peak you have Strings, you have Junoon, all these big names, and also underground scene उस वक्त exist करता था. We'll talk about the underground scene as well. बट जनरली वो एग्जिस्ट करता था एंड एयर वाई म्यूजिक होता था, आग होता था, ये 3-4 चैनल्स होते थे. एंड आई रिमेम्बर एज अ किड कि मैं हर वक्त यही देख रहा होता था. और स्ट्रिंग्स का जो स्पाइडरमैन वाला गाना था, आई यूज टू कॉल इट दैट, उसका जो स्पाइडरमैन वाला गाना था वो दैट वाज ऑन रिपीट द होल टाइम. वी हैड रिकॉर्डेड इट, ठीक है, वो वीसीआर होते थे उस वक्त, एंड इट वाज ऑन रिपीट द होल टाइम. And even now, I think Faisal Kabadia is one of the coolest people out there. ठीक है, I don't think he gets enough credit for his longevity. And Hadika Kiani, बूहे बारियां तो मतलब मैं बड़ा हुआ हूं ना वो सुनता हुआ. और उसके बाद उसका जो अब अगेन नॉट अ लॉट ऑफ पीपल नो दिस, उसका उसका जो रंग का जो रेंडिशन है इन सीजन 5 ऑफ कोक स्टूडियो, उसके अंदर फरहाद हुमायूं, वो he's on the drums, and oh my god, what a performance that is. अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे. फिर उसके बाद उसके अंदर मोमो, ये सारे लोग, they were just starting, and it was like very sort of early days of Coke Studio. Again, another topic that we'll hopefully cover. uh, Umar, I want to know from you because of अच्छा again एक और चीज, इस Zoom call में इस वक्त I feel like the most untalented person because I've never been able to conceive music. I've never been able to मतलब I've written lyrics here and there, but वो छोड़ो. For me thinking of जो अभी आप लोगों ने बात की, thinking of rhythm, thinking of धुन, for me that's like if you ask me to imagine a new color. ठीक है, I just can't, मतलब how do you guys do it? Like, what's the starting point? Yeah, if you were to sort of translate it for someone in a more technical fashion, so how would you describe that process? Because for someone like me, it's like very difficult to even conceive a dhun or a rhythm of any sort. So how's the process? How does it work? Or is it just aa gaya dimag mein and we just went with it? Yeah, it's sort of always different when it comes to making music for everyone. It has a lot to do with intuition, I would say. Whatever suits you, whatever like floats your boat, whatever your mind's like thinking of doing in the moment. Because sometimes it starts off with, I'd say, a very random lyric, a random sentence, which you think you can build an entire soundscape around. तो मेरे साथ लाइक काफी दफा होता है कि आई हैव अ सर्टेन लिरिक जो बस फंस जाता है दिमाग में कि लाइक ओ ये लाइन आ गई है. फिर आई जस्ट pick up a guitar, you try to form a melody, or basically in a more technical fashion, अगर मैं इसको बोलूं तो it could be कि there's two scales, there's a minor scale and a major scale on the guitar. So if you want sort of happier, calmer, more positive sounds, you try to write in a major scale. But फिर आप minor scale में जब लिखते हो when you want something like darker with a heavier theme or something more angry or sad, negative emotions basically.
तो इन लाइक लेमन टर्म्स और टेक्निकल टर्म्स वो होता है कि अगर वो लाइन मुझसे ऐसे रेजोनेट कर रही है कि ओ आई थिंक दिस इज गोना फॉर्म अ हैप्पी सॉन्ग, तो आई जस्ट लाइक प्ले समथिंग मेजर स्केल में गिटार पे एंड सॉर्ट ऑफ थोड़ा थोड़ा फिगर आउट करने के बाद एक मेलोडी बन जाती है उस सेंटेंस के साथ। फिर वो एक सेंटेंस से दो हो जाते हैं, दो से चार हो जाते हैं, यू हैव अ वर्स देन यू हैव अ कोरस। तो लिरिकली इस तरीके से स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाता है एंड एट द सेम टाइम व्हेन यू आर इन अ सर्टेन स्केल उसके बाद इट मेक सेंस कि अच्छा अब मैं सी के स्केल में हूँ, सी मेजर के स्केल में हूँ, तो आई एम गोना start writing this song or I'm going to start forming its melody and compose it in C major. तो उसमें then guitar पे you play around with chords, you play around with different progressions, आपको arpeggio करना है, आपको strumming करनी है, आपको finger picking करनी है, जिस तरीके से भी it makes sense you do it and you form a song. Again हमेशा different होता है. This is when you write lyrics first. If you sort of have a melody first, काफी दफा ये होता है कि you're doing something on the guitar and you have a melody or you have a rhythm, you have a sort of like finger picking technique you've maybe like picked up from someone else कि oh ये अच्छा है, इसमें कुछ मैंने बजा लिया, I like this, I wanna write a song over this. तो with that melody you have उस पे आप कुछ लिखना स्टार्ट कर देते हो और मेलोडी के साथ आपको अंदाजा भी होता है कि अच्छा मैं ये बजा रहा हूँ, आई नो वेयर दिस सॉन्ग कुड गो. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगेन कोटिंग जॉन मेयर. आई डोंट नो इफ यू हर्ड जॉन मेयर का स्लो डांसिंग इन अ बर्निंग रूम, वेरी फेमस सॉन्ग. तो इट्स उसमें ये है कि मेलोडी बहुत डिफरेंट है लाइक फ्रॉम यू नॉर्मली लिसन टू इन पॉप रॉक सॉन्ग्स. बहुत 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 कैची उसकी लाइक रिफ भी है, मेलोडी भी है. तो जॉन मेयर लाइक उसने भी एक पॉडकास्ट में कहा था कि व्हेन आई हैड दैट रिफ विद मी इट गोस लाइक ta ta na ta 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 ta. He just had that and वो like over and over उसको play कर रहा था and he said कि मैं अपने producer से बोल रहा था like studio में कि this song feels like or this riff feels like two people slow dancing in a burning room. तो वही with that just like that riff or those notes he had that idea in his hand कि in his head कि ये soundscape मेरे लिए ऐसा sound कर रहा है कि it's like two people slow dancing in a burning room. So around that he built like a very 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 beautiful song. Uh, so yeah, इसी तरीके से happens different every time, but yeah, it's either lyrics first or it's melody first, और वहां से you sort of step by step find your way. Hafsa gave me such a judgmental look when I said that I had not heard this song. Sorry, Hafsa. Yeah, Slow Dancing in a Burning Room by John Mayer. You've not listened to it? I'm sorry. I'm नहीं, sorry. it's मैं अपनी okay. research करके Yeah. आऊंगा अगली दफा. But No, Hafsa, would you it's not about the research. It's about the fact that you're missing out on good content. No, that's why I got you guys on the podcast to educate myself on music. अभी तो educational सवाल अभी आने हैं. But Hafsa, would you like to add something to this melody coming first versus the lyrics coming first वाली sort of thing? इस पे भी debate होती है? Is this like a purists versus contemporary thing? या बस it's just whatever, as Umar said, whatever floats your boat. Bro, मेरी जो मैंने एग्जांपल दी उससे मेरे पास तो लिरिक्स आए थे फर्स्ट. मैं गोपा दे रहा हुआ उसमें मेरे पास तो पहले लिरिक्स आए थे, उसके बाद बस लिरिक्स की वो एक टून बन गई थी और फिर वो बन गया था. तो आई थिंक मैंने कभी इतने लाइक सॉन्ग्स बनाए नहीं, लेकिन आई थिंक मेरे लिए व्हेन आई थिंक ऑफ इट या फिर व्हेन आई थिंक ऑफ मेकिंग इट इन द फ्यूचर, तो फॉर मी आई थिंक लिरिक्स वाला द फर्स्ट स्टेप वुड बी द I don't know, it just works better for me. Also, just by the way, Umer, the song by John Mayer, जिसका एक और भी version आया है. Um, oh God, I've forgotten the name again. अभी जो जिसका ballet version आया है. Uh, Last Train Home. Yeah, oh my God, I love that song. I love that Beautiful. song a lot. Yeah. Beautiful. और जो की different version should definitely. We will have to link all these songs in the description. I think I will do that. Yeah. Um, can you guys hear me? Yeah, Yeah. yeah. All right, all right. Just so moving on. I'm coming to one of my sort of um
one of these big questions that I have. अब इसके अंदर थोड़ी सी एक personal story भी होगी. तो please bear with me. So again वही चीज कि I grew up listening to all these bands and people who were on TV. ठीक है. और वो सारा कुछ हो गया without any real sense of how this acts as not just a representative of a representation of Pakistani music, but also as something of an archive of that specific time period. So the early 2000s, if you think of early 2000s music, you think very distinctly of all of this. You think about the mid 2010s, you think about Coke Studio in the context of Pakistan. अभी हम पाकिस्तान के context में बात करें तो अब इसके अंदर and I've asked I think I've had a conversation on this with someone from the music society as well. कि in Pakistan, we talk about the indie scene, we talk about the mainstream scene. I've personally always felt that there is no real indie scene right now because it's either the mainstream scene or it's nothing. ठीक है. Ab of course that's changing with YouTube and all and with people like Hassan and Roshan, of course that's changing. Uh, but my question is कि now in the music society एक तो हो गए ना ये तो मेन स्ट्रीम वाले तो हो गए ये जितने भी नाम है ये तो हो गए but I see this inclination towards listening to those जो कि इतने पॉपुलर शायद नहीं है ठीक है you have the example of Mehdi Malouf of course Coke Studio के बाद he also like rose in popularity लेकिन उसका कोई गाना है which you guys refer to as like the music society का anthem और वो सारा कुछ so talk to me about that alternate scene in Pakistan as well because I mean I don't ये मैं कोई बहुत mainstream listener नहीं हूँ ठीक है I also like listen to a lot of music but I always struggle to sort of reconcile the two I always struggle to see कि यार what's happening on the other side ठीक है and what is the actual perception of Saragot again we're going to have to take the example of Coke Studio कि एक टाइम था when I was just blown away by it ये season 11 season 12 की बात है I was blown away by it I was like oh my god इससे तो बेहतर कोई चीज नहीं है और पता चल रहा था कि these are actually the worst performing seasons of Coke Studio so I've always had that gap in understanding कि हो क्या रहा है तो in order for you I mean please help me understand कि क्या मतलब like what's good music what's bad I know it's subjective but like how do you sort of distinguish between mainstream or indie or underground or I mean वो कैसे चलता है how does all of that work So do you? नहीं, you can go first. अच्छा sure. यार तो इसके आजकल स्पेशली पाकिस्तान में एक आदत सबको लग गई है कि we're classifying everything as indie music और everything as underground या like coming of age हर चीज इंडी क्लासिफाई हो जाती है तो एक तो वो है कि इंडी जॉनरा इसकी वजह से ना थोड़ा लाइक इन क्वेश्चन आ गया कि व्हाट एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूट्स एज इंडी तो जैसे अभी लाइक कोक स्टूडियो में भी आर्टिस्ट लाइक हसन रहीम उससे पहले ही था ऑब्वियसली बट आफ्टर कोक स्टूडियो तो ही लाइक मेगा पॉपुलर पाकिस्तान में हसन रहीम के जो गाने थे पहले के ऐसे कैसे जूना वगैरह पीपल ये इंडी म्यूजिक है फिर हसन रशान के गाने आ गए अच्छा ये भी इंडी म्यूजिक है जैन जोहेब की कवाली है बट वो कवाली जिस फैशन में कर रहे हैं ये अब इंडी कवाली हो गई है बहुत लाइक मेन स्ट्रीम कवाली नहीं है ये न्यू फॉर्म ऑफ कवाली है तो बस हर चीज जो हमें लगता है कि सॉर्ट ऑफ डिफरेंटली हो रही है वी स्टार्ट क्लासिफाइंग दैट एज इंडी म्यूजिक तो आई थिंक एक तो उस वजह से लाइक काफी कंफ्यूजन हो जाती है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एज गुड और बैड इंडी और नॉट इंडी और फिर जो इंडी नहीं होता वो पॉपुलर म्यूजिक बन जाता है और फिर वो एक जनरलाइज टर्म हो जाती है कि अच्छा पॉप म्यूजिक है तो अच्छा नहीं होगा कोक mm, स्टूडियो में इस सीजन जितने गाने प्रोड्यूस हुए हैं ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम वर पॉप yeah गो वाज पॉप सजन दसना वाज पॉप इवन yeah जो आपके गाने व्हिच डिडंट डू टू वेल जैसे कि बेपरवाह मोहम्मद मुस्तसन का इट वाज सॉर्ट ऑफ पॉप महरम वाज पॉप जॉनरा पॉप था लाइक क्लासिकली डन पॉप सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं आप बट पॉप एलिमेंट oh उसमें था oh या wow अच्छा I didn't know that I thought अच्छा मैं समझा बस वो एक सैड सॉन्ग है
I didn't know that sad songs could also be pop. Oh wow. You Sad songs can be classified as pop music. मतलब outside of Pakistan, if you talk about mainstream artists like Taylor Swift और Ariana Grande वगैरह, इनके एल्बम में जो सैड कट्स होते हैं, they're pop music. उनका genre तो pop ही रहता है. Oh. Yeah, so similarly, Meram was a sort of pop song done differently, you could say. But उससे like उसका वो तब्दील नहीं हो जाता, क्या कहते हैं, genre तब्दील नहीं हो जाता. क्योंकि we wanna listen to it and sort of still feel cool, we start classifying it as indie music. तो वहाँ indie बेचारे की लग अपनी वो बहुत क्वेश्चन में आ जाती है. उसके अलावा अगर हम बात करें तो where the scene changes is के coming to कोक स्टूडियो प्राइमरीली, जैसे खजर ने बोला, फॉर सीजन 11 and 12 insanely good seasons. Obviously रोहेल हयात मेगा 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 स्टार पाकिस्तानी म्यूजिक हिस्ट्री में, लाइक लेजेंड. बट लोगों को वो चीज समझ नहीं आई. क्यों? बिकॉज डायनामिक्स चेंज हो गए, व्हाट वी आर लिसनिंग टू चेंज. और उससे भी सबसे ज्यादा बड़ी बात जो मैं उन्हें खुद भी उस दिन लाइक काफी डेप्थ में रियलाइज करी, कि हमारे लाइक अटेंशन स्पैन इतने छोटे हो गए हैं कि हम 2 ढाई 3 मिनट से ज्यादा के गाने नहीं सुन पा रहे अब. विद लाइक कोक स्टूडियो के, अगर कोक स्टूडियो की हॉल ऑफ फेम बनाई जाए और उसमें जो गाने आएंगे, और लाइक एटलीस्ट 7 minutes लॉन्ग, 8 minutes Agreed. लॉन्ग, 9. Agreed 100%. तब वो अटेंशन स्पैन था कि वी कुड लिसन टू दैट. हमारी जनरेशन में लाइक हम में शायद अभी भी थोड़ा बहुत हो, बट अब जो हमसे, मतलब आई फील ओल्ड सेइंग दिस, बट लाइक हम हमसे छोटे बच्चे आ रहे हैं, लाइक 17 और 18 year olds, उनका इतना अटेंशन स्पैन नहीं है. दे वोंट अमजद साहब, खान, जिस उन समझ नहीं आएगी ये क्यों, क्या हो रहा है. लाइक अच्छा चल रहा है, इसकी वजह से आई थिंक डिस्पैरिटी क्रिएट हो जाती है. नॉट जस्ट मतलब कोक स्टूडियो में तो होती है, बट उसके अलावा भी लाइक जो हम म्यूजिक सुन रहे हैं समझ रहा है. हसन रहीम की नई एल्बम, आई थिंक नो सॉन्ग लाइक क्रॉस 3 minutes and 15 seconds in length. हसन एंड रोशान के सारे गाने आर अराउंड 3 minutes in length और अच्छे. या राइटिंग से ज्यादा फोकस अब चला गया है ऑन मेलोडीज और लाइक क्रिएटिंग साउंड्स व्हिच लाइक इमीडिएटली अट्रैक्ट पीपल. अब्दुल हन्नान के गानों में लाइक मेलोडीज इतनी कैची होती हैं कि यू सॉर्ट ऑफ जस्ट इंस्टेंटली आपके दिमाग में घुस जाती हैं. तो अगेन पॉप की दुनिया, पॉप की ही दुनिया रहेगी आगे भी. मेरे हिसाब से तो 1990 से हम पॉप ही करते आ रहे हैं. स्ट्रिंग्स नूरी वगैरह सबने, जुनून ने पॉप रॉक किया है, सही है. इट्स लाइक वेरिएशंस ऑफ पॉप. उसके बाद कोक स्टूडियो sort of brought in a lot of genres and tried to make them appealable to the public. और वो यही कर सकते थे कि हल्का सा पॉप एलिमेंट सब गानों में हो. बहुत सारे गाने लाइक मन अमादेयम टाइप गाने, उसमें जैज फंकी फील होती है, बट इस तरीके की कि आपको मजा आए. और नॉर्मल लिसनर को मजा तभी आएगा जब उसको गाने में पॉप फील आ रही होगी, जब उसको कुछ अट्रैक्टिव लग रहा होगा. तब वो था. अब व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक 2 3 minutes के लाइक इंस्टेंटली लिसनेबल गाने बार बार, विच यू कैन लाइक मेलोडी इंस्टेंटली आपके दिमाग में रिकॉल हो जाए. है वो सब भी. इंडी म्यूजिक इन इटसेल्फ बहुत वियर्ड लाइक गाने इंडी लेबल कर सकते हैं, जैसे बैक सीट लवर्स जो मैं सुनता हूँ फ्रॉम लाइक माय ओन लिसनिंग साउंड्स. उसमें वो उस तरीके के गाने लाइक इंडी होते हैं. पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में यू कुड से मेहदी मालूफ मेक्स इंडी म्यूजिक, सही है. म्यूजिक which is different, which everyone can't listen to, like सही है. like और you like melodies ऐसी नहीं कि everyone sort of goes back to them instantly या कुछ. it's very independent music. अगर like उस तरीके से बात करें in definition, तो indie music is just independent music कि एक artist without a label or without some sort of backing, he's just putting out music, सही है, independently. but in terms of it being a genre, for me like यही हो जाता है कि जैसे someone like Gracie Abrams, वो इस तरीके के गाने बना रही है कि इट्स सिंगर सॉन्ग राइटर एस्क. इट्स इन इट्स ओन एसेंस वेरी vulnerable and personal to the writer, but at the same time when she's putting it out, she doesn't want that pop appeal कि उसको फर्क नहीं पड़ेगा.
if the song like blows up or if it's doing well in like numbers or that sort of shit. It should just be very personal to what the writers on. To me, that's what indie music is. या आजकल है बट लाइक मिसकंसीव हो रहा है. और बाकी अगेन वही बात के डिफरेंस अब क्या है पहले से. तो इट्स जस्ट पॉप, इट्स जस्ट अडेप्टिंग टू लाइक टाइम. और अब हम क्या कर सकते हैं, कोक स्टूडियो ने सबसे बड़ा शिफ्ट ही इसलिए किया था. लाइक लिटरली कोक स्टूडियो 180 हो गया बिकॉज सीजन 11-12 के बाद उनको अंदाजा हो गया था कि अब लोग नहीं सुन पा रही है. प्योरिस्ट सुन लेंगे, वो तो हमेशा सुन लेंगे, बट आपने अगर एक कमर्शियल प्रोडक्ट बना के दुनिया को देना है तो उसमें यू कांट रिलाई ऑन दैट. उसमें यू नीड न्यू साउंड्स, उसमें यू नीड समवन लाइक जुल्फी जिसको पता है कि यार मैं इस तरीके की डिफरेंट चीज भी करूंगा. पसूड़ी जैसा डिफरेंट गाना भी मैं स्टाइलाइज इस तरीके से कर सकता हूँ कि वो लोगों के दिमाग में घुस जाएगा. तो या इट्स जस्ट दैट. All right, all right. Hafsa, would you like to add anything to this? Yeah, so Umar ने काफी ज्यादा indie पे touch upon किया है, but I will talk about your question on good or bad music a little bit more. Okay, obviously it's very subjective, लेकिन so one thing about me is कि, and this is also very specific to the preferences, कि बस मुझे ये होता है कि गाना जो है ना सुरीला होना चाहिए. अब जैसे म्यूजिक में भी ना there are like different categories. अभी भी आई एम स्टडीइंग के we have ठुमरी, ये like proper जो classical music है ना उसकी like different categories हैं. We have ठुमरी, we have ख्याल, we have ध्रुपद. तो ये सारा लाइक म्यूजिक की जो स्टडी है ना प्रॉपर उसकी कैटेगरीज हैं कि ये सारा क्लासिकल म्यूजिक. अब उसमें भी व्हेन आई डिस्कवर्ड ठुमरी ना तो उस इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंगेजिंग. उसकी कई बहुत ज्यादा लाइक मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट लाइक आई एम जनरली टेलिंग के ठुमरी वाज नाइस, ख्याल वाज वेरी काम पीसफुल, यू नो द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट यू लिसन टू व्हेन यू आर when it's raining, you know, and you just एक बहुत comfortable सा माहौल बना होता है. But then there's this category Drupad जो अभी मैंने recently discover किया. Even though there's like a lot of audience that loves Drupad, even the instructor that is who's teaching us loves Drupad, but there's I don't know, there's some reason that I don't like Drupad at all. So even though उसके ऊपर मतलब लोगों ने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं और इंस्ट्रक्टर इटसेल्फ वो भी बता रही हैं कि जब वो उन्होंने पढ़ना शुरू किया था तो ध्रुपद रेजोनेटेड अ लॉट और वो इतना सुरीला है और ये है वो है, बट फॉर मी इट्स जस्ट नॉट सुरीला एट ऑल, राइट. सो मेरी जो डेफिनेशन का वो जो गुड और बैड म्यूजिक होगा ना वो हमेशा उसी एक चीज पे डिपेंड करेगा कि वेदर आई एम फाइंडिंग इट सुरीला और नॉट. और अभी थोड़े दिनों पहले भी वन ऑफ माय फ्रेंड्स वो इसी तरह का एक बिल्कुल इंडी म्यूजिक, खैर वो एक नया गाना आया है, वांट नेम किसकी तक किसका आया है क्या था, लेकिन मैंने वो गाना सुना और वो बहुत मतलब वो प्रॉपर लाइक इट सेट्स द एग्जांपल ऑफ एन इंडी म्यूजिक वाला गाना. लेकिन आई डेंट फाइंड इट सुरीला. लेकिन देयर आर लॉट ऑफ अदर इंडी सॉन्ग्स दैट आई फाइंड सुरीला. सो again, to what you've said, it's very subjective. It's about what you like. There's no good or bad music. There's going to be a large audience telling you, okay, oh, this Drupad is nice or this particular indie song is nice, but you will just not find it nice. You know, it will just Yeah, not resonate with you. It is music at the end of the day. It's art. लेकिन वो जो सुरीला वाला जो जो चीज होती है ना जो factor, it's just very personal to you. yeah. And continuing in a similar vein, I again वही बात, alluding to my childhood, I remember that, मेरे घर में बहुत पुराने गाने लगते होते थे, लता, रफी, किशोर कुमार, I mean all the time. And उस वक्त I was like, यार ये तो सुनने में ही नहीं अच्छा लग रहा, मैंने ये नहीं सुनना, it's sad, ठीक है. But now when you sort of come to a stage where you can sort of you can appreciate not just the lyrical genius but also the musical genius of it all, so then you look at it differently. अब छोटे होते अगर so a song that I'm listening to बहुत ज़्यादा आजकल is दागे दिल by इकबाल बानो. और बचपन में मैं वो सुनता था और मैं कहता था क्यों क्यों इतना दुख, क्या जरूरत है, why can't you guys just be happy for once, क्यों खुद भी डिप्रेस्ड हो, क्यों सबको डिप्रेस कर रहे हो. एंड नाउ आई अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट अ डिप्रेसिंग सॉन्ग, it's actually a very sort of introspective thing कि again lyrics में I don't want to go into the lyrics, मैं गलत बोल दूंगा कुछ, but
वो वाली चीज. So I think um, the evolution of perception is also a factor in this, because the songs that we like I'm aaj, we might not like them, 10 years later. Yeah, sorry, aap kuch keh rahi thi? exactly. No, I'm sorry I'm interrupting you. लेकिन this is it's such a huge thing कि एक दफा एक गाना सुनो in a certain era, in a certain mood, you don't like it, but then in another mood you start liking it. You in fact start loving it sometimes, and that happens a lot. So फिर आप सोचो कि उस time पे you thought it was a bad music, but then when you listen to it in another mood, you thought it was a good music, right? So एक वो Yeah. बहुत एक मुश्किल है to define कि अच्छा ये जो है वो good. और even अब जो ये गाना है आदे बाय अब्दुल हनान, इस गाने में भी एक पॉइंट आता है उसमें ना जो उसकी प्रोडक्शन एक ना वो बीट मिस कर देता है. दिस इज व्हाट आई नोटिस. उमर, डिड यू नोटिस गाने में जो एक पूरा जो उसके म्यूजिक है उसके अंदर रिदम के अंदर देयर इज दिस बीट दैट ही मिसेस उस गाने के अंदर, लेकिन इट जस्ट साउंड्स नाइस. या आई डू Wait, फील is लाइक कि that प्रोडक्शन में उसका possible? कोई मसला है. Can उसका कोई Oh अभी my god. I even discussed it with the music person, so I'm a bit sure कि वो Oh इस तरह का कोई wow. मसला है उसकी प्रोडक्शन का, लेकिन it just sounds nice. It's good music. I like listening to it, so it's good music. I don't Yeah, know. yeah, and that's probably what matters at the end of the day. Um, और and also the fact कि अभी हम लोग उस रेस से निकल गए हैं कि it has to be perfect. अभी जब जैसे आप क्लासिकल म्यूजिक की अगर बात करो तो उसके अंदर तो एक एक चीज डिफाइंड होती है कि क्या होगा कैसे होगा, सेट ऑफ रूल्स और ये वो. लेकिन आजकल का जो जेंजी टाइप म्यूजिक है उसमें लोग पीपल आर एक्चुअली ऑन पर्पस ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम द परफेक्शन. ठीक है कि वो इतना ज्यादा परफेक्ट ना हो, बहुत ज्यादा रेजोनेट करे लोगों के साथ, लोकी सा हो, थोड़े से अंदर इम्परफेक्शन सी भी होनी चाहिए. so mhm. this thing, it just really speaks out. Acha, we've talked about how now people are sort of moving away from what is conventional, and let's call it rebellion, for lack of a better term, or maybe not, but let's just call it rebellion for the time being. Now in my sort of observation, वाइटल साइंस के आप जमाने से देखो कि I mean, immediately after the Zia era, as soon as the music industry sort of started reopening, and all of those things happened, you look at vital signs, or and then vital signs sort of paving the way for future bands, and ki hum baat kar chuke hain. And then of course you would argue that in the late 2000s maybe there was a break, and maybe there was an identity crisis or something, but we can go into that later. Now, it's always been about being unconventional, right? It's always been about rebellion, as much as I can remember, at least in the Pakistani context. What do you think about this sort of idea? Okay, music is almost synonymous with the dil ki awazein, and just like going against the norm and challenging what is considered normal, and just pushing the envelope. So what do you guys think of that? I know it's a gross generalization to just call oh, music is for rebels only. I mean, of course that's not what I'm saying, but just the idea that music has so many times been found at places of revolution, or of just where people are just trying to sort of challenge the status quo. What do you guys think about it? And I would love if you could quote some Western examples as well. Uh, yeah, not just with music. I think with all forms of art, ये sort of feeling or expression of freedom, of like being vulnerable, of trying to convey yourself, ये सारी synonymously आ जाती हैं उसके साथ, of like being के people can hear you, not in a way that people can see you, in a way that people can hear you, like they can hear what you're trying to tell them. So yeah, with your art, or with your music, or with your sketches, or with your shairi, in whatever way, shape or form art comes or goes to you. I think वो एक element expression का, creativity का, freedom का, क्योंकि हमेशा से art की definition में ही रहा है, या music की definition में ही रहा है. तो
वो जिस एरा में भी हुआ है होगा, म्यूजिक सॉर्ट ऑफ एक अलग उसकी जगह होगी, इन दैट टाइम पीरियड, और दैट रीजन और दैट कंट्री और whatever part of the world how like it exists. Western examples इसकी जैसे कि यू नो मेटल, हैवी मेटल मैं तो नहीं सुनता, मेरा रूममेट बहुत शौक से सुनता था यहाँ पे, अब वो बहुत सॉफ्टी हो गया, पॉप म्यूजिक सुनता है सिर्फ। तो वेलकम टू द क्लब। वेलकम टू द क्लब हारिस। तो हैवी मेटल लोग मतलब आप नहीं सुन सकते, यानी बहुत बहुत स्पेसिफिक ऑडियंस होती है जो सुन सकती है उसकी, हर किसी को नहीं सुनता, लोग सुनते हैं, इवन माई सेल्फ इंक्लूडेड, हम सुनते हैं तो कहते हैं कि क्या शोर मचा रहे हैं। But to them, it's sort of in their own right. They're creating music for a specific sort of target audience, a specific group of people, जिनके लिए that form of music is liberty or expression. Yeah, like trying to express themselves. उनका जो mood है, उनकी जो inner feelings है, whether it be in like negative terms or negative emotions like anxiety or depression maybe, or it could be like पॉजिटिव यूफोरिया, जुबिलेंस, आप जो भी फील कर रहे हो वो उनको उस म्यूजिक के थ्रू फील हो रही है। सही है, उनकी जो इमोशंस विच आर रनिंग रैम्पेंट थ्रू देम, इट्स थ्रू दैट लाइक जॉनर ऑफ म्यूजिक, तो वो उससे रेजोनेट कर रहे हैं। सिमिलरली मोस्टली हम लोग अगर पॉप से रेजोनेट करते हैं तो वो हमारे ओन राइट में है, सही है। वाइटल साइंस वगैरह पाकिस्तान का, जैसे खजर ने बोला, उस टाइम में वो म्यूजिक बनना बहुत जरूरी था, क्योंकि बैंड कल्चर वर्ल्ड वाइड बहुत 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 पॉपुलर हो गया था विद द जेपलिन्स एंड सॉर्ट ऑफ बीटल्स हो गया, द रोलिंग स्टोन्स, इस तरीके के बेतहाशा बैंड थे उस टाइम पे, जिनकी वजह से ये था कि पिंक फ्लॉयड बैंड म्यूजिक इतना पॉपुलर हो गया है, पाकिस्तान में भी इस तरीके की चीज कैसे हो सकती है। तो वहां पे व्हेन सॉर्ट ऑफ वाइटल साइंस, तो like laid the foundation for that। बाद में जब स्ट्रिंग्स आए, फिर जुनून आया, नूरी था, कॉल था, लाइक आगे अगर आप 2010s तक आते जाएं, तो उन सब के म्यूजिक में ये नोटिस करना कि इतनी सिंप्लिसिटी है इन द वर्ड्स कि एवरीवन रेजोनेट्स इन अ वे कि आपको सुनने में बहुत 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 अच्छा लगता है। सही है, कभी अगर आप मतलब गौर ना भी करना चाह रहे हो, कुछ ना भी करना चाह रहे हो, अगर आप नूरी के गाने लगा के बैठ जाएं, इतने सिंपल लिरिक्स होंगे, ढोल की ताल पे गा रहे, गा रहे दिल झूम के गा रहे, अपना हर दर्द छुपा के नाच और सबको नचा रहे। नॉट समथिंग वेरी कॉम्प्लेक्स है जो आपको सोच के बैठना पड़े कि शायर ये कहना चाह रहे हैं, या द वे वी डू इन नैरेटिव ऐसे कि दिस इज व्हाट द या ऑथर इज ट्राइंग टू से। वो नहीं है कुछ भी, इंटीरियोरिटी। सिंपल वर्ड्स। या इंटीरियोरिटी नहीं है, इट्स वेरी सिंपल वर्ड्स कि आप बस सुनोगे एंड यू कैन रेजोनेट टू इट, आपने अपना कुछ मीनिंग उसका ले लिया, ढोल की ताल पे गा रहे दिल झूम के गा रहे, सिंपली आप उसको बस फील कर सकते हैं। सही है, तो एक फीलिंग और इमोशन और कनेक्शन जब आपको किसी चीज के साथ मिल जाता है, व्हेन you're वन विद समथिंग, व्हेन you're होल विद समथिंग, तो आई थिंक फिर चाहे एरा हो, चाहे क्या कहते हैं कोई भी टाइम हो जो पहले था, जिस तरीके से वेस्ट में इन्फ्लुएंसेस चेंज हुए म्यूजिक के, जिस तरीके से ईस्ट में इन्फ्लुएंसेस चेंज हुए म्यूजिक के, वो हमेशा होते रहेंगे, बिकॉज लिबरेशन और एक्सप्रेशन आपको आर्ट से जिस तरीके की आती है वो किसी और फॉर्म से नहीं आती। So for me, sort of that maybe answers your question, but yeah, creativity या and expression are what I take away from this. या यस हफ्सा। I should, yeah. या So music to rebel, I think, very much like an HSS question, something that I've been talking about since I have joined HSS. लेकिन I think ये बहुत ज़्यादा वो है, like it's very common, matlab it's very, when you look at history, this has been happening a lot. And I remember there was this debate competition back then when I was at my school, और उसमें भी we had to use a particular music, और उससे हमने like उसकी like history सारी बतानी थी. So the music that I used was basically kind of कह लो कि एक गाना था, ए पुत्र हटाते नहीं बिकदे,
It was on 1965 war. नूरजहां का गाना था, ऐसे ए पुत्र हटाते नहीं बिकते, और उसमें मतलब उन्होंने वो पूरी वो एक इमोशनल वो सारी अपील थी कि जिस फिर जब जब लोगों ने सुना है, और मेरे बाबा अभी तक मतलब वो बताते हैं वो एक एरा था कि जब लोगों ने ये सुना था, लोग लिटरली बाहर आ गए थे. So you know, like हम्म the magic of music, it's not a very simple thing. बोलना बहुत आसान है, लेकिन जस्ट इमेजिन के लोग गाना सुन रहे हैं और लोग इतने ज्यादा पंप अप हो रहे हैं, इतने ज्यादा मोटिवेट हो रहे थे कि लोग घरों से बाहर आ रहे हैं वो गाना सुन के कि ए पुत्र हटाते नहीं बिकते, कि हमने जो वॉर है उसके अंदर हम लोगों ने भी पार्टिसिपेट करना है, लाइक वी हैव टू कंट्रीब्यूट एंड पार्टिसिपेट वगैरह. सो आई थिंक आंसर्स योर क्वेश्चन कि म्यूजिक बहुत ज्यादा इस चीज में यूज होता रहा है. एंड ऑल्सो व्हाट उमर ऑल्सो सेड के आर्ट और ये सब, it's not just, and you also mentioned that it's not just to rebel, it's also about just expressing what you're feeling at that moment. So be it rebellion, be it a sad emotion, happy emotion, anything at all, वो music के अंदर आप express कर रहे हो. Yes, that is very true, and we have a lot of examples in the history. Talking about history and talking in the Pakistani context, um, how disheartening or how discouraging is it when you hear stories, on the lines of that this artist did not, towards the end of their lives, this artist did not have enough money for their hospital bills or didn't have enough money for rent, and these are like very popular artists. People say this about Mehdi Hassan as well, or wo Sara Kuch, that towards the end it was really tough going. So as aspiring artists, yeah, as people who are, of course, who are students of music, but at the same time, I mean, I'm sure if given the opportunity, you guys would love to, like, take this to the next level. So how disheartening or how discouraging is it to sort of see when um मतलब एक तो वो बड़ों की बातें हैं ना कि ओ मतलब ओ स्कोप नहीं है, but even apart from that, even when you sort of independently analyze, uh, how discouraging is it? And और मतलब चलो हम I'll come to the other questions later, but how discouraging is it? Hafsa, would you like to go first? Financial constraints, to I mean be financial specific. constraints and just generally the way artists are treated, in again in Pakistan. जैसा अभी उमर को ही मैं उस दिन बता रहा था कि अब जुनून, in order for जुनून to have been accepted in Pakistan, they first had to perform at the Z Awards in I think 98, और फिर उधर जब इंडिया वाले लोगों इंडिया में पॉपुलर हुआ तब पाकिस्तानियों को ख्याल आया ओ ये तो हमारा बैंड है. And all and those little things, how just generally as a community or as a society, we just don't like our own people, which and it is so prevalent when you look at these artists or wo sara kuch. So what are your thoughts on that? Acha, so I have an example for this as well. I don't know if this fits. Lekin, do you guys know the father of Arif Lohar, Alam Lohar? Yes. Do you guys know about Alam Lohar? Do you guys know about the song Vaja Mariya by Alam Lohar? No. Acha, nahi. So, he created the song वाजा मारिया, और उसके पीछे exactly जो भी खिजर जिस चीज की बात कर रहा है वो उस थोड़ी सी वो उसकी बैक स्टोरी यही है कि the name वाजा मारिया, it's like calling people. तो उसकी स्टोरी ये है कि अलम लोहार का आई थिंक कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया था, उसकी टांग टूट गई थी, एंड ही डिडंट हैव द मनी. तो हॉस्पिटल वगैरह में ऑपरेशंस और इस सब कुछ इस तरह का कोई स्टोरी थी. आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, लेकिन उस पे उसने फिर वो गाना बनाया कि लाइक मैं आवाजें मार रहा हूँ, मैं लोगों को पुकार रहा हूँ, बुला रहा हूँ, लेकिन बस वो पैसा फंसा हुआ है कि मेरा ऑपरेशन नहीं हो पा रहा, ये वो. तो जस्ट आई डोंट नो, आई जस्ट थॉट ऑफ दिस एग्जांपल कि मैं ये बताऊंगी. इट्स आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कि किस तरह से ये भी सारी चीजें म्यूजिक के थ्रू वो हुई. लेकिन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, इट वुड बी वेरी डिस्करेजिंग कि एक आप फील्ड में कंट्रीब्यूट कर रहे हो और अच्छा भी कर रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, बट यू आर नॉट गेटिंग द रिकग्निशन, and you don't have the funds to even do it. And again, my brother was very musically inclined, और उसका
somewhat यही issue था. And he had a guitar, he had the ability to do it, he had the voice to do it. He even created 2 songs, लेकिन it didn't reach the audience. और funds का भी कह लो, और फिर थोड़ा सा वो एक constraint भी था family की तरफ से भी, being the bigger brother, he had to take care of the family. तो वो parents की तरफ से भी ये कौन सी field है, इधर नहीं जाना. So it is very discouraging. It actually stops you from doing it. It can stop you from pursuing the career itself. So these examples, these things are very real. These happen. This has happened in my own family. Yeah. Yeah. I mean, commiserations to your brother. Um, yeah. He's fine. He's fine. He's married now. He's working. He has even forgotten about it. Oh wow. Okay. All is well that ends well. I suppose. Yeah. Omer, what's your take True. on this? When you're going into sort of an arts field, or you're going into something like music composition or music writing, आपको idea तो होता है कि it's gonna be tricky to firstly break in, and then when you've broken into that industry, sustaining is very, very difficult. और अगर आपने by any chance you're one of those many thousands of artists who try, you're that one that actually sustains. उसके बाद living with that sustainability कि ठीक है, वही मेहदी हसन वाली एग्जांपल, मैं 40 साल से बेताशा गाने बना चुका हूँ. अब towards the end of my life मेरे पास इतना पैसा होगा या नहीं होगा मुझे पता नहीं है. तो sort of वो preconceived notion आपके head में होता है कि if you're going into this thing, there's a very, very, very high chance कि you're gonna be financially constrained, or you're gonna have to survive on like low budgets and stuff, काफी time तक maybe. और हो सकता है कि आपने अच्छा पैच भी देख लिया, उसके बाद once again like things turn around और बुरा पैच आपको दोबारा नजर आ जाए. तो if you're sort of okay with that and you've made peace with that idea in your head, उसके बाद अच्छी चीज है कि साथ में आपको रियलाइज होता है कि this is my passion, and if this is what I really want to do, and I like work very, 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 very hard, then I can get into it. Unfortunately, not just Pakistan, especially Pakistan, but like worldwide भी scope या दिमाग में हमारी बात यही डाल दी जाती है कि आर्ट्स के साथ जो है ना बहुत मुश्किल है, लाइक करियर क्या ही बना लोगे, और करियर्स लिमिट इतने ज्यादा हो जाते हैं कि विद म्यूजिक people who are interested in music, उनके लिए म्यूजिक में बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज हैं. इट्स नॉट जस्ट के दे कुड बी सिंगर्स, और दे कुड बी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, और दे कुड बी राइटर्स और कंपोजर्स. इतनी ज्यादा टेक्निकल फील्ड्स अलग हैं विद लाइक साउंड इंजीनियरिंग, एंड अगर आप वो नहीं करना चाह रहे, विद म्यूजिक डिजाइन एंड लाइक लेइंग आउट सेट्स फॉर म्यूजिक वीडियोस, उस तरीके की चीज इनकॉर्पोरेट करके दूसरे किस्म की कॉर्पोरेट जॉब्स म्यूजिक में अब तो बहुत ज्यादा बन गई हैं, स्पेशली विद Spotify going global, coming to smaller countries like Pakistan. There are a lot of like new avenues opening up जिसमें आप music कर सकते हैं. You can stay in that domain without having to be like the performer which you always wanted to be. क्योंकि not everyone's gonna get that, obviously, आपको ये पता होता है. तो उसके साथ ये अच्छी बात है कि fields नई खुल रही हैं. Financially sustain करना फिर भी बहुत मुश्किल हो जाएगा म्यूजिक में, बट डिस्करेजमेंट मेरे ख्याल से अगर हम लाइक अब देखें तो थोड़ी सी पहले के मुकाबले में कम है. Whereas इनके अगर लोग ये बात रियलाइज कर लें कि थोड़ी बहुत फील्ड्स अब और हैं, स्कोप थोड़ा सा वाइड हो रहा है, तो यू कैन बी मोटिवेटेड कि हाँ मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ. मे बी आई डोंट बिकम द शॉन मेंडेस और द जस्टिन बीबर और द आतिफ असलम आई ऑलवेज Finally, ड्रीम्ड names ऑफ that I बीइंग. know. तो वही, बट लाइक हो सकता है मैं लाइक इनमें से कुछ भी ना बन सकूं, बट हो सकता है लाइक अगर मैं म्यूजिक में ही रहूं, आई कैड डू समथिंग कि ठीक है मैं परफॉर्मर नहीं हूं, बट आई एंड अप डूइंग समथिंग फॉर द नेक्स्ट 40 years व्हिच मेक्स मी हैप्पी. सही है. maybe I'm working somewhere globally for Spotify की marketing team, and I'm coming up with ideas for like advertisements और billboards जिनसे पाकिस्तान के किसी मखसूस शहर में, कराची में, म्यूजिक हमें किस तरीके से नई प्लेलिस्ट को प्रमोट करना है, मैं उसका टीम लीड हूँ. तो देयर इज अ लॉट ऑफ न्यू एवेन्यूज ओपनिंग अप. मैंने खुद भी रिसेंटली इसी
पे अभी रिसर्च किया है, इसलिए आई नो थोड़ा बहुत कि अगर आपको म्यूजिक में काम करना है तो अभी स्कोप काफी बेहतर है पहले से, एज इन के यू कुड बी मोटिवेटेड, डिस्करेजमेंट आपके लिए कम हो सकती है। एंड इस तरीके से जैसे हफ्सा ने बात की, बहुत दफा सोसाइटल फेमिलियल प्रेशर होता है, फैमिली बर्डन होता है कि ओ वही के म्यूजिक करोगे, मतलब हर आम है एंड व्हाट नॉट जो हम लेबल लगा देते हैं एकदम से। अगर उस चीज को हम इस तरीके से लाइक पुश करें या फैमिली को पोर्ट्रे करें तो इट कुड मेक अ लॉट मोर सेंस टू देम। जनरेशनल गैप आई थिंक इससे कम हो जाता है कि एट द एंड अच्छा जॉब ही तो कर रहा है, फिर वो स्पॉटिफाई में हो या कहीं भी हो, तो इट वुड मेक सेंस टू देम। Yeah, I actually agree with that because last year in I think in March, just when the season 14 was like coming up, I actually had the good fortune of meeting Payam Qureshi, जो आपको videos में भी नजर आएगा, that guy with the curly hair. तो उससे मेरी Yeah. बातचीत हुई इसी बारे में, and he had a degree in software engineering, and then software engineering, the computer science, something IT related, and then he sort of became the sound engineer. और वो मुझे बता रहा था कि ये दुनिया में टुवर्ड्स द एंड वो एक पार्ट आता है ना जिसमें देर सॉर्ट ऑफ पुटिंग देयर हैंड ऑन समथिंग और वो zzz Yeah, करके आवाज निकल रही है। तो ही टॉक टू मी, ही टोल्ड मी लाइक द मैकेनिक्स बिहाइंड दैट एंड हाउ इट्स लाइक एआई ट्रेन्ड, और उसको जो है ना वो डिस्टेंस का एक सेंसर है जिससे ये होता है, एंड एंड ही सॉर्ट ऑफ केम अप विद दैट, which comes to show that there's a lot of room for innovation, there's a lot of room for for me, for even people like me, for example. I mean, I hope this happens, but like I would love to be like Coke Studio ka data analyst, who tells them ki, oh okay, how are we going to do this? And that's it's a fun notion, of course. And एक और जो बात की आपने कि कि हराम है और ये सारी जो सोसाइटल कंस्ट्रेंट्स भी आ जाते हैं। अभी रिसेंटली एलएमएफ पे जैन जुहैब जब आए हुए थे, ठीक है, तो उनसे भी एक बंदे ने यही सवाल पूछा कि मतलब टिपिकली these people are मतलब टिपिकली you guys are referred to as Mirasis and etc etc, जैसा कि derogatory terms। उन्होंने कहा कि do you even know what Mirasi means? A Mirasi is someone who is very very strongly connected with उनकी मिरास, यानी उनके roots। तो I mean, call us Mirasi as much as you want to. I mean, we're going to own it up because that's exactly who we are. So I do, and this is so heartwarming because when you see people sort of breaking those things कि वो मुझे मिरासी कहते हैं, कितनी बुरी बात है, people coming out of those shackles, and especially again I cannot emphasize on this enough, सबको लेकर मैं बड़ा patriot हूँ, but especially in the context of Pakistan, it's just so good to see and it's just so heartwarming, and I hope this continues, and I hope we can sort of take it to the next level as well. Um, um, Towards the end of this episode, which is probably going to be my favorite episode, I want to do something of a Q&A with you guys. So, and this is like so cliched, but let's still do it. And I'll ask both of you these questions. Uh, Top three Western songs post 2000, and top three Eastern songs post 2000. टॉप फाइव भी कर सकते थे लेकिन चलो टॉप थ्री हमने कर दिया फॉर द टाइम बीइंग, एंड आई एम श्योर you guys are going to think about this because and I'll get the ball rolling. So Western after after 2000, I think, यार oh my god, कौन सा गाना था जेलो का 2011 में जो आया था? Oh my god, how can I on the forget? floor. On the floor. Okay. So we start with On the Floor. Okay. Then Attention by Charlie. I don't know how to say the surname. Okay. And third would be, and the third is going to be Blank Space, Taylor Swift. So that's like Uh, my, Vole Gane. And Eastern May, it would be Aaye Kuch Abir, Atif Aslam, season 12, Pasuri. And Pasuri, not just because of the song, but because of the impact that it has had. And thirdly, it would have to be Lari Chuti. So that's like those are my picks. Um, String से भी एक दो गाने आ सकते, खैर अब हम you see why this is hard, you see why I'm asking you all these questions, yeah. putting you all on the spot. Have you guys decided? Hafsa, do you want to go? I honestly don't want to answer this question. I don't है ना? know. It's like
I don't have an answer. हाँ, मतलब सब मेरे अच्छे हैं, सब मेरे गाने अच्छे I हैं. think Umar, remember हम लोग जब एक दफा किस्सा you and me sitting खोखा पे, तो हम लोग शायद इस बारे में बात करें, favorite R, favorite ये favorite song. I just don't know favorite songs. I don't know at all. So नहीं Umar, you go first. We'll think about it when if I want to answer or not. So Yeah, we like narrowing it down to like three or five, like immensely difficult, obviously, because so many songs that you've heard and you love that like don't come to your head on the spot, but like Yeah. from the songs like I'm thinking of right now, 2000s start with for me by Taylor Swift. It's my favorite song of all time. लोग कौन सा पूछते हैं वाला? क्यों जब I didn't get it. begin begin Oh, again. okay, okay, okay. So like I have no like I don't know I in tear up like every time. I don't know why. It's very simple like the song. Like, it's about like down and out. Uh, she talks in the context of love, but मैंने उसको ले लिया था कि जिंदगी में like किसी भी चीज में if you're down and out and you feel shattered and you feel you're lost on a random Wednesday, like things will start to begin again. Don't worry about it. तो वो यही होता है कि like she is very saddened about like losing someone she loved, but then in a cafe on a random Wednesday she sees a new guy. It's like, but on a Wednesday in a cafe I watched it begin again. Yes. Simplicity of it like gets Yeah. me every time. Yeah, yeah, yeah. It gets me every time. So that song for sure. Then Edge of Desire by John Mayer. I need to look up Amazing, this John amazing Mayer song. guy. Again, one of those. Sidre, you I will don't send know you a John shit ton of Mayer. songs. I just want to go kill myself. It's Yeah. okay. Like I नहीं am नहीं very नहीं. I happy mean, he yeah, it doesn't is know John okay. Mayer. I'm gonna like introduce John Mayer to him properly. I'm very excited. बड़े टाइम बाद मुझे कोई मिला है कि किसी John Mayer like proper सुनवा सकूं. हाँ नहीं, I सुनवाओ love सुनवाओ. John Mayer too. And now that we're talking about it, my favorite song would be Slow Dancing in a Burning Room. It's about that वो 2 seconds गुजरने के बाद वो जो बीट आती है उस उस बीट के लिए तो गाना सुनते हैं वो. So yeah, one of my favorite songs. बस सही है. जॉन मेयर को Beautiful. तो मैं सुन रहा हूँ. ठीक है, तुम लोग मुझे लिंक्स और वो सब कुछ भेजो अच्छा और पता हम है सुनेंगे. खिजर, yes, या या. Slow Dancing in a Burning Room live in LA. ओ वो Yeah, माय. yeah. बल्कि जो आई असल एम गाना है Album is उससे रियली बेहतर पम्प्ड. है. ओ Yeah, माय. ओके ओके. admittedly. फिट है, फिट है, फिट है. So with that being said, I think we reached the end of this episode. I Before we leave, I want to pay my regards and I want to express my gratitude to you two for coming, for taking out the time, for dealing with हमारे logistical issues. This was an excellent episode. I loved every minute of it, and I hope we can do this again. So thank you guys for coming, and we will see you again soon. Thank you for having us, man. Thank Soon, you. inshallah. Thank you. Inshallah. Yes.